Hello. Yes, sir. Sir, just waiting. We all are set, sir. Okay. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. शोभा मैम, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ सर, प्रिंसिपल सर है ज्वाइंट, सो यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनंदन। परम आदरणीय प्राचार्य श्री मनीष जैन, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय इंदौर क्रमांक 2, श्री केएल कुंभा सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2, विद्वान शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण परिवार की ओर से केंद्रीय विद्यालय इंदौर क्रमांक 2 के प्राचार्य महोदय श्री मनीष जैन, विद्वान शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सभी को शुभकरी और अर्थात स्वागत और नमस्कार। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को एक करना और इसीलिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। इसकी आत्मा इसी बात की है कि भिन्न देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक हैं। हम विविध भाषाओं के भाषाभाषी हैं, विविध क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है एक होकर के रहना। और ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हम सभी लोग एक दूसरे के करीब आए, उनसे जुड़ सकें, उनकी भाषा को समझें, उनकी संस्कृति को समझें और बहुत नजदीकी से एक दूसरे को जान सकें। जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यही है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। बिना विलंब के आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण से, और इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय इंदौर क्रमांक 2 की पीजीटी इकोनॉमिक्स मैम शोभा प्रजापति मैम को। तो जोरदार तालियों मैम का अभिवादन कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज हम केंद्रीय विद्यालय इम्फाल नंबर 2 के बच्चों से बात कर रहे हैं। सचमुच एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हम विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों को, उनकी भाषाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक हमने इसको समझने का प्रयास भी किया है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने मणिपुरी भाषा में बहुत सारे सेंटेंस याद किए हैं, बनाए हैं, बहुत सारे शब्द सीखे हैं और आशा है मुझे कि आप लोगों ने भी, वैसे तो आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो एक विषय के रूप में आपको हिंदी तो मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो भी हिंदी ही है, तो आप बहुत अच्छे से जो अलंकारित हिंदी है उसको सीखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो कार्यक्रम है आज हम सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत कर रहे हैं, मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और विशेष रूप से स्वागत करती हूँ प्राचार्य KV2 इम्फाल श्री के अलंग कुंभा सर का और प्राचार्य KV2 इंदौर श्री मनीष जैन सर का। आप दोनों प्राचार्य ने इस कार्यक्रम में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई और हमें मार्गदर्शित किया, अपना गाइडेंस दिया। मैं इस कार्यक्रम में दोनों प्राचार्य का पूरी हमारी टीम की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरे सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में अपना श्रम दे रहे हैं और उन सभी बच्चों का जो प्रतिभागी के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएंगे, गरिमामय बनाएंगे। तो एक बार पुनः मैं दोनों विद्यालयों की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका।
और अब कार्यक्रम का जो जो पहला चरण है उसमें सबसे पहले एक पीपीटी प्रस्तुति है ग्लोबल वार्मिंग पर, और उसे प्रस्तुत करेंगे केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2 के बच्चे आयुष और आरना के पर। आयुष। नमस्कार, मैं आयुष कुमार आशु केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2 लांगन की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज एक पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से आपको जलवायु परिवर्तन के मूल्य समझाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है दैट इज क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। Some pictures can be seen here which define climate change awareness like this. First of all, we will see that what all are we going to see in this PPT. So first of all, we are going to learn about climate, then about climate change, then climate change a matter of concern, cause of climate change, effects of climate change, the effects of climate change in Manipur particularly, then the steps taken by the Manipur government on climate change, and lastly about the conclusion and ways to prevent climate change. So let's begin. So what is climate? It's a long-term pattern for a particular area. The average term of it is 30 years. So it's a very long period on which the weather, the conditions remain same. Some things which are measured particularly which remain constant over the period are temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, and many other things. It is also the interaction between the atmosphere, lithosphere, hydrosphere, cryosphere, that is the overall biosphere. And we know about the atmosphere. Atmosphere हमें पता है हमारा वायुमंडल जहाँ सारे गैसेस होते हैं. Lithosphere हमारा लैंड एरिया, हाइड्रोस्फीयर हमारे वाटर बॉडीज. क्रायोस्फीयर क्या होता है? Cryosphere is the solid water bodies that mainly the Arctic and the Antarctic part of Earth, like the means the polar regions. North pole or south pole, those are called and the glaciers as well, those are called the cryospheric parts. Nextly, climate change. What is climate change? It's the change in climate, that is the change in the overall weather conditions and all. That's climate change. It may be natural also, but it is artificial now, means due to our thing. It is also the imbalance between the in the biosphere, like lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and the cryosphere, as I stated. तो ये क्लाइमेट चेंज होता है। नाउ यूएन के हिसाब से 1800 यानी 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के बाद से जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ज्यादातर जो भूमिकाएं हैं, ज्यादातर जो पार्ट है वो हमारा है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली व्हिच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ व्हाई इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न? दैट इज टू बी सीन। सो it is a matter of concern because it leads to extinction of many species. There are many species which are getting extinct, which are just वो विलुप्त हो जाते हैं दुनिया से इस क्लाइमेट चेंज के कारण। उनमें से एक है पोलर बेयर, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने की कगार पर है। एक डोडो भी है और एक है मैं मणिपुर की पार्टिकुलरली बात करूं तो मणिपुर का जो स्टेट बर्ड है दैट इज नोंगिन, इट इज आल्सो गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। अब पॉपुलेशन माइग्रेशन ऑब्वियस है कि अगर हम कहीं पर हैं और वहां पे हमें रहने की आदत है और बाय चांस रैपिडली वहां पे पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पूरा वेदर चेंज हो जाता है, तो उसमें जल्दी से अडैप्ट होने में हमें टाइम लगता है। और अगर हम अडैप्ट नहीं हो पाएंगे तो या तो हम मर जाएंगे या फिर हमें हमारा घर बदलना पड़ेगा, हमें कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा so that we can survive. So humans as well as the other animals, they migrate from one place to another, which is a matter of concern because एक जगह ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अलग एक्टिविटीज की वजह से ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो अगर दूसरे जगह पे वो जाएंगे तो वहां भी ऐसा हो सकता है। एक जगह वैसे ही डिग्रेड होगी और दूसरा जगह फिर से डिग्रेड हो जाएगा। Now nextly, it also changes the land surface, soil erosion and many other things. Coastal erosion भी होता है due to the rise in the sea level. Ocean circulation है, ocean circulation भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है because ocean का टेम्परेचर राइज होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और सी लेवल जैसे ही राइज होगा उस वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अभी जो स्पीड है क्लाइमेट चेंज का दैट इज अलग-अलग चीजें जो अर्थ को डिग्रेड कर रही हैं, उनमें से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका स्पीड, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। यानी ज्यादातर जो चीजें जो अर्थ को डिग्रेड कर रही हैं दैट इज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू आवर एक्टिविटीज that we are performing nowadays. And what are the activities we will see here in the causes of climate change? First of all, burning of fossil fuels.
फोसिल फ्यूल्स बर्न करने से, ज्यादा बर्न करने से अलग अलग गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide. As a science student, I can speak it nicely because I know that they deplete the ozone layer. That's one thing. Now, first is burning of fossil fuels, next is turning of forest lands to farmlands. The forest lands are being cleared. जिन लोगों को, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, they need to live. And one of the best ways of living is to perform agriculture. And for agriculture, they need land for which they clear the forest. And due to that, due to that, deforestation बहुत large scale पे हो जाता है. Agriculture करने के लिए वो lands को clear करते हैं, forest lands को clear करते हैं, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन लेवल में भी डिप्लीशन होता है. मेनली द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, ज्यादातर फैक्ट्रीज बनी और भी बहुत सारी चीजें हुई, उस वजह से केमिकल वेस्ट लैंड पे, वाटर पे, एयर पे, हर जगह रिलीज हुआ. इस वजह से उससे भी ओजोन डिप्लीशन और बाकी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज में. क्लाइमेट चेंज हुआ है एक्चुअली, और लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, एज आई स्टेटेड, इन द फॉरेस्ट लैंड्स टू फार्मलैंड. ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से डिफोरेस्टेशन किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. बिकॉज हम अपने आप को एनहांस करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. तो जब प्रकृति हमारे साथ खेलेगी तो फिर वो बहुत ज्यादा घातक होगा. नाउ इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मेजर इफेक्ट्स क्या है? राइज इन द ओवरऑल टेंपरेचर ऑफ द अर्थ. वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, 1 डिग्री का राइज ऑन अ particular small area doesn't matter as much, but अर्थ जितने बड़े एरिया पे सिर्फ 1 डिग्री का राइज मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ना होता है. So that is one thing. It's due to climate change, the overall temperature of the earth is rising rapidly. Change in rainfall also. Deforestation होगा, then obviously rainfall change होगा. अगर rainfall कम हुई तो फिर सूखा पड़ेगा, और अगर rainfall ज्यादा हो गई तो बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है. And frequent and more severe storms. In the past 5 years, we have seen 2017 से लेकर 22. I am only talking about these 5 years particularly. 2017 से लेकर 22 तक बहुत रैपिडली स्टॉर्म्स आए हैं. समथिंग लाइक अम्फान, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया की बात करूं तो फानी, अम्फान और ताउते नाम के ऐसे बहुत सारे तूफान आए हैं. ये सारे बे ऑफ बंगाल के तूफान हैं. और जब ऐसे तूफान आते हैं तो हमने देखा है कि किस तरह हमारे एरिया जैसे आसाम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब के एरियाज किस तरह से पूरी तरह खत्म हो गए थे, बहुत तहस नहस हो गए थे एक्चुअली. नेक्स्टली मोर ड्राउट, सूखा ज्यादा पड़ता है. जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि तो क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं करेंगे, और क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं करेगा तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, भूखमरी होती है बहुत बुरी तरह. फॉर्चुनेटली इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द होल वर्ल्ड दिस इज अ वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न. अफ्रीका इज वन एग्जांपल जहां पे आज भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत बुरी तरह मर रहे हैं. नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. हमारा particularly the Siachen glacier, Gangotri glacier, Yamunotri glacier, many more glaciers in the northern part of India, they are melting due to this climate change. Because पिछले 5 से 10 साल ही नहीं, मैं particularly 20 साल से बात करूं, पिछले 20 साल में इंडिया का भी क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज हुआ है. टेम्परेचर में राइज बहुत जल्दी आया है, और हम इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं? हम सिर्फ 3 साल का समय लेते हैं. 2019 में कुछ और था, लॉकडाउन के बाद अभी कुछ और है. हम देख पा रहे हैं हमें कितनी बुरी तरह से धूप का सामना करना पड़ रहा है. दिस इज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमारे सामने है ये, हमें दिख रहा है. Increasing sea level, if glaciers will melt, obviously the glaciers that melt, they produce water and that will go into the seas. और glaciers में बहुत सारा पानी होता है, वो जैसे ही मेल्ट होकर sea में जाएंगे, the sea level will rise. If the sea level will rise, then they will take over the land, and जब land पे take over करेंगे, then we are the ones who will be the first one to die, because many other animals can survive in water, but we cannot personally survive in water. We don't have that adaptability. Now nextly, ये सब कुछ मिला के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, that is ozone depletion. The ozone layer of the atmosphere protects us from the UV rays, the ultraviolet rays. Ultraviolet rays जब हमारे स्किन पे पड़ते हैं, then they can cause skin cancer. That is one very big problem. Skin cancer से हम ग्रसित हो सकते हैं अगर अल्ट्रावायलेट रेज हम पे पड़े. And ozone depletion हो रहा है CFCs, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन तरह के गैसेस के कारण. Nextly, effects of climate changes in Manipur. As we are talking about Manipur here, तो मणिपुर में बहुत सारे climate changes हुए हैं. यहाँ का क्लाइमेट जनरली रेनी है, मतलब यहाँ पे अक्सर कभी भी बारिश हो जाती थी, अभी ऐसा नहीं है. अभी भी हो जाती है लेकिन पहले जैसा नहीं है. मैं यहाँ पे बहुत समय से हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ.
पिछले 5 से 10 सालों में यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज्यादातर लोगों को काम मिला तो फिर उन्हें काम पर जाने के लिए गाड़ियां चाहिए, अलग अलग काम करने के लिए भी गाड़ियां चाहिए। उस वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। टू ऑफ द मेन गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So these two gases have been depleting the earth a lot. Now nextly, forests have been cleared. Population बढ़ी है, रहने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर वगैरह, that's why population ज़्यादा बढ़ी है। तो फिर forests have been cleared for agriculture and living. Now forest degradation ये प्रॉब्लम है, जैसा कि बताया हमने। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर 1.7 डिग्री सेल्सियस से राइज हो सकता है। एज आई सेड कि छोटे एरिया में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज डजंट मैटर, बट एक बहुत बड़े एरिया में, मणिपुर इज आल्सो बिग स्टेट कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स, ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी बिग स्टेट बट स्टिल इट्स अ बिग स्टेट। सो compared to other states as a big state, और इतने बड़े एरिया में 1.7 डिग्री सेल्सियस का राइज बहुत ज्यादा होता है, एंड पार्टिकुलरली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इट्स projected to rise by 1.8 degree Celsius, which is the maximum rise in the history of temperature of Manipur. Now, due to deforestation, as per the state government, the rice yield is projected to drop by 3 to 4% by 2050, and 10 to 40% by the end of the 21st century. That is also one big problem. Manipur का जो इकोनॉमी है, that is also somewhat based on agriculture, because यहाँ पे ज़्यादातर लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। उस वजह से 3 to 4% का ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, and 10 to 40% is a very big drop. So this is also one problem. Now steps taken by the state government. State government ने जो steps लिए हैं, उसका जो नाम रखा गया था, that is Manipur State Action Plan on Climate Change. This was taken in 2010, and under this plan they have planned to set up institutes to teach the officers as well as the students about the importance of this climate change, कि क्यों हो रहा है और क्या-क्या स्टेप्स वो लोग ले सकते हैं। Now उसके बाद classifying areas according to the this one greenhouse gas emission. ग्रीनहाउस गैस कहाँ से ज्यादा निकल रहा है, कहाँ से कम निकल रहा है, और उस हिसाब से वो प्लान करते हैं और वहां पे जाके लोगों को बताते हैं इसको आप रोकिए, क्यों रोकना है, इससे क्या नुकसान है। ये सारी चीजें बताने के लिए भी ये मणिपुर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में जिक्र था। एंड आल्सो अप्लाइंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडस्ट्रीज रिलीज केमिकल वेस्ट on land, in water, as well as in the air in the form of gases, and land and water in form of solid and liquid. Phones के semiconductors में कुछ liquids होते हैं जो land degradation करते हैं। उसको अगर हमने land में हमने dispose किया, then that can degrade our land very badly. That is one thing, and इसलिए उसमें कुछ restrictions लगाने के सोचे गए थे। Industries are not much developed in Manipur, but still पिछले 5 से 10 साल में industries थोड़े बहुत develop हुए हैं, and it is projected to develop more. So we will have, so the state government will have to apply certain restrictions to stop climate change. Now these steps might help the state to prevent climate change, but it's not sure, because ये स्टेप्स अगर हम अपना भी लें, ऑलरेडी द क्लाइमेट इज डिग्रेडिंग, क्लाइमेट इज चेंजिंग, सो ये हो सकता है ऐसा करें, बट ये श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। नाउ अब जब हम ये देखेंगे कि कितना सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देन वी शुड नो कि क्या वेज है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ अब प्लैनेट ये हमारा है, दिस इज आवर प्लैनेट, ये हमारा घर है, इसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सो इतने टाइम से हम जब तक क्लाइमेट से खेल रहे थे, हम जब तक प्रकृति से खेल रहे थे, हमें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब जब प्रकृति हमारे साथ खेल रही है तो उसका फल भी भुगतना हमारा कर्तव्य है, और हमारा फर्ज है कि हम प्रकृति से माफी मांगे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट यूजेज ऑफ सीएफसी रिलीजिंग अप्लायंसेस। सीएफसी रिलीजिंग अप्लायंसेस के दो बड़े एग्जांपल्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स और एसीज और रेफ्रिजरेटर्स का यूजेज कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो सीएफसी फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं, उस वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन डिप्लीशन के क्या नुकसान है मैं आपको बता देता हूं। यूवी रेज स्टॉप करते हैं, यूवी रेज स्टॉप नहीं होंगे तो स्किन कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा है। देन
सेविंग एनर्जी बाय वेरियस मींस वन ऑफ इट इज एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब की खासियत होती है कि थोड़े से बिजली में भी वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। कुछ एलईडी बल्ब होते हैं जो हमारे हाथ के टच से भी काम करते हैं, बिकॉज हमारा हाथ 2 वोल्ट का करंट छोड़ देता है। उस वजह से हमारा पूरा बॉडी 2 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकता है। उस वजह से एलईडी बल्ब जल सकते हैं। तो ये एक चीज है जिससे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। एनर्जी बनाने में जो द मोस्ट यूज टेक्निक इज पानी से बिजली बनाना। और जब पानी कम होगा तो जाहिर सी बात है तब भी सूखा पड़ने के चांसेस हैं। और हम पानी को अगर संजो के रखें तो फिर वो ज्यादा बेहतर है उससे बिजली बनाने से ज्यादा। नाउ एनगेज यूजेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी हम कम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एनर्जी आज की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजली की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए वी कैन यूज सोलर एनर्जी। हर जगह नहीं बट ज्यादातर जगहों पे सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। विंड मिल से हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। नाउ यूजिंग वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। एक्चुअली हमारी गाड़ियां बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। जो दो गैसेस मैंने बोली, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये दो गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर हम कहेंगे तो फिर गाड़ियां कम होंगी, जिस वजह से हमारा काम चल सकता है। उसके बाद वेजिटेबल्स हमें ज्यादा खाने चाहिए। नॉन वेज जो चीजें हैं वो ज्यादा खाने से कार्बन एमिशन भी ज्यादा होता है। दिस इज वन थिंग मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स बीइंग वीगन। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्टली प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अफॉरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ प्लांट करेंगे, ऑक्सीजन लेवल राइज होगा तो हमारा ही फायदा है। सो दिस इज आल्सो वन वे। नेक्स्टली रिड्यूस यूजेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या नुकसान है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। यूजेज ऑफ प्लास्टिक अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है दैट वी विल बी एबल टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज वेरी मच। नेक्स्टली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चीजों को कम यूज करना, फिर से यूज करना और जितना हो सके उसको रिसाइकल करना। ये हम हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। जितना हो सके हमें अप्लाई करना होगा ताकि कम से कम चीजें यूज हो और सबसे और क्लाइमेट चेंज को हम बहुत अच्छे तरीके से रोक सकें। तो मुझे सुनने का और समझने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जलवायु परिवर्तन पर अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए, उसके प्रभावों से हमें परिचित कराने के लिए और हम उससे बचने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं ये बताने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और अब पावर पॉइंट प्रस्तुति है ग्लोबल वार्मिंग पर, वैश्विक तापमान पर, और इसे प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी हैं केंद्रीय विद्यालय इंदौर क्रमांक 2 के बच्चे। तो जोरदार तालियों से उन बच्चों का अभिनंदन कीजिए और भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करें। Overpopulation and management. ओवरपॉपुलेशन होता क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ने से हमें ग्लोबल वार्मिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज्यादा रिलीज करते हैं। बट अगर हम पेड़ काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? और कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई लेगा ही नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमें ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से? Centuries ago, Swedish scientist Svante Arrhenius in 1896 gave us the first warning that more CO2 is equals to more global warming. But हमें इनकी warning verify करने में more than a 1990 years यानी कि 1 century लग गई। In 1987 his warning was verified. It took us almost a century to realize the truth. But where did we fail to understand? हमसे गलती कहाँ हुई? तो पहले के समय में ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस होने की वजह ना होने की वजह से भी पीपल को ये लगता था कि ओशन CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे। People used to think that oceans would absorb all the CO2 present in the atmosphere. Well, was it correct? Oceans, the saviors. People used to think that oceans are our saviors. वो हमारे रक्षक हैं। Absorb carbon dioxide from the atmosphere wherever air meets water. CO2 जैसे ही समुद्र में wind breeze से जैसे ही पानी से टकराती है, so that interaction causes a mix of CO2 in the water. Then it divides the water into two layers: the upper layer, mixed layer, or the shallow water, and the beneath layer is the deep ocean. What happens here is due to more turbulence,
the CO2 present in the shallow water get mixed with the deep ocean. What happens is harm to marine life or the victims. हम सोचते थे that oceans global warming के शिकारी है पर वो तो खुद के शिकार बने बैठे हैं. It was not known then what would happen if carbon dioxide molecule would dissolve in water. Carbon dioxide molecule जाएगा कहाँ ocean से? Now we know that current pH of ocean is 8.1. It is a simple equation that carbon dioxide plus water makes carbonic acid. It's a diluted acid, concentrated नहीं होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो फिर मरीन लाइफ को बहुत हार्म पहुंच सकता है. Now let's talk about effects of global warming. First effect is climate change. Climatic change से बहुत लोग confused हो जाते हैं that what is the difference between global warming and climatic change. Difference is that global warming as the term suggests it is the warming of the globe. It is just confined to the term of rise in temperature. What happens next is climatic change. Climatic change is an effect of global warming. For example, rise in temperature होगा उसे हम global warming कहते हैं. Rise in temperature से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा एंड सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे. फ्लड्स आने को ही हम क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं. ये आज के समय में बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी को बिकॉज नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट में नासा ने पब्लिश किया था. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जापान के पास 3 कंसेक्यूटिव टाइफून्स आए हुए थे जिससे चाइना, जापान और साउथ कोरिया में येलो एंड रेड जोन्स डिक्लेयर कर दिया था. As well as rise in temperature is also an effect of global warming. Then threats to ecosystem. How is it threatful to the ecosystem? Simple. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ओशन ज्यादा कार्बन सिंक करेंगे एंड ज्यादा कार्बन उनके अंदर सिंक होंगे तो फिर कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा ओशन में एंड ड्यू टू दैट मरीन लाइफ को खतरा हो सकता है. वी नो दैट मेनी पीपल सर्वाइव ऑन सी फूड. Not in India, maybe in India and in foreign countries as well. उनका food source खत्म हो जाएगा if ocean sink all the carbon dioxide present in the atmosphere. Let's talk about CFC and ozone layer. Sunlight, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, sun UV rays भेजता है अर्थ से. यहाँ पे ओजोन लेयर एक छन्नी की तरह काम करती है. It filters all the rays coming from the sun and it lets enter only the less harmful rays. Then what does CFC do here? CFC, as we know, chlorofluorocarbon. What they do? They prick the ozone layer. वो ओजोन लेयर में छेद कर देती हैं जिससे रेस को डायरेक्ट पाथवे मिलता है अर्थ में आने के लिए. इससे म्यूटेशंस हो सकते हैं. Many skin cancers can spread due to this and it is very harmful for humans as well as for animals. Now, what can we do? The only plant that you grow might be the only reason you are today. Plant more trees. And KV is doing this on a very large scale. जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के ऑब्जेक्ट्स और उतने ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने के ऑब्जेक्ट्स. दैट इज ट्रीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. यूज ऑफ व्हीकल जैसा कि हमने देखा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज carpooling. You can insist your parents to carpool together whenever you go to the places. Family planning to reduce overpopulation and much more. The only way that we can reduce overpopulation is family planning and being educated about it. Let's talk about what has changed today. So average temperatures today are about 1 degree or 1.8 Fahrenheit higher than before started burning a lot of coal around mid 18th century. Well, है तो बहुत छोटा सा डिफरेंस 1 डिग्री का, बट अगर 1 डिग्री के टेम्परेचर के डिफरेंस में हमें इतने सारे टाइफून्स एंड फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, व्हाट विल हैपन अगर ये बढ़ गया तो? What will change if we did not change? Well, most climate scientists say that by the onset of the year 2100 or by the onset of the 22nd century, temperatures will be 2 degree to 4 degree higher than they were before the pre-industrialization period. Well, अगर
1 डिग्री टेम्परेचर में हमें इतनी तबाही देखने को मिल रही है, तो 2 डिग्री में क्या होगा, 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर में क्या होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। This is the only earth that we have so far, and this might be the only chance as well. Thank you so much. We know that together we can still make this planet a heaven. Thank you so much. धन्यवाद भव्या और रिया, वैश्विक तापमान पर अपने सार्वजनिक विचारों को हमसे साझा करने के लिए। अपने बहुत ही सुंदर ढंग से जो पावर पॉइंट प्रस्तुत की वो सराहनीय है। और अब नॉलेज शेयर के बाद समय है लेडी शेयरिंग का। इसलिए मैं अब एक गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2 के बच्चों को कि वो आए और अपने शुरू से हमें सराबोर करते हैं।
थैंक यू। धन्यवाद बच्चों इस सुंदर से गीत के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इंदौर क्रमांक 2 के बच्चों को भी ये गीत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हाथ उठा करके बताइए बच्चों, आपको अच्छा लगा? यस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और अब बारी है इंदौर क्रमांक 2 के बच्चों की प्रस्तुति की, तो जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिवादन कीजिए। वो भी धन्यवाद बच्चों इस सुंदर से गीत के लिए, बहुत अच्छा प्रयास। और अब फिर से अवसर है अपने अपने राज्य के जो धरोहर है और परंपराओं को जानने की, समझने की। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2 के बच्चों को से अनुरोध करूंगा कि वो पीपीटी के माध्यम से यहाँ की परंपरा और यहाँ की संस्कृति को प्रस्तुत करें। पीपीटी के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर रही हैं जोशरीना और सुहाना।
Good morning, everyone. Myself, and my friend Suhana of class 10, representing AB launching on this video conference with our peer state MP under the EPSP program. We are here to present about the culture and heritage of Manipur. First up is history and heritage of Manipur. Shahid Minar, the indomitable spirit of the patriotic Meitei and tribal martyrs who sacrificed their lives while fighting British in 1891, is commemorated by the stone minar at beingkvian Park in the heart of Nepal City. Next is Kangla. Kangla, the center of Manipur's power in 1891, the historical embodiment of Manipur rulers and the peoples of Manipur. Kangla is a significant place in the heart and mind of people of Manipur. Next, we have some festivals of Manipur. First is Yeongsang, observed in the month of February or March. Next, Cheraba, the Manipuri New Year celebrated in the month of April. It marks the beginning of the Lunar New Year for the Manipuris. Kang, the Ratya Haikru Hitokwa, observed in the month of September. Good, Festival of Kvian Mizo, celebrated on 1st November every year. And last, Gangnai Festival of Kabuy Naga, celebrated in the month of December and January. Yakshan, Holi, celebrated for 5 days commencing from the full moon day of Falgun, February or March. Yakshan is premier festival of Manipur. The Thaba Troba, a kind of Manipuri folk dance, is particularly associated with this festival. Yakshan to Manipuri is what Durga Puja is to Bengali, Diwali to North India, and Bihu to Assam. Jairaba. During the festival, special festive dishes are prepared which are first offered to deities. It is celebrated during the month of April. A part of the ritual entails villagers climbing the nearest hill's top in belief that it will enable them to rise to greater height in their worthy life. Good Festival of Kvian and Mizo. It is an autumn festival of different tribes of Kvian Mizo groups of Manipur. The festival has been variously described at different places among different tribes as Chabang, Kut, or Kadao. It is a festival celebrating the harvest and is observed on the 1st of November every year. Next is culture and cuisine of Manipur. The first subtopic is culture and religion. Sri Govindaji Temple, a historical Vanshribathe center adjoining Manipuri's former Maharaja Royal Palace. The Govindaji Temple is one of the most attractive sites for tourists. My friend Swana will present to you the rest. Good morning, everyone. I am Suhana presenting the culture and religion of Manipur. First is Poloi. Poloi or polo, literally final product or end product is a cylindrical skirt made up of thick fabric that is ornamented with squares and mirror. It is usually used by the Meitei Hindu brides in Meitei wedding and the dancer in Manipuri Ras and Leela dance. Heading on to the next slide. Phanek. Phanek or Phanek is a traditional Meitei sarong indigenously worn by women folk predominantly in Manipur. Khanglai Park. Heading on to the next slide. Ras Leela. In the field of art and culture, the state is best represented by its classical and dance forms. The Ras Leela, the epitome of Manipuri classical dance, is interwoven through the celestial and internal love of Radha and Krishna, as has been described in the Hindu scriptures. This grateful dance reveals the sublime and transcendental love of Krishna and Radha and the gopis' devotion to Lord Krishna. Lai Haraba. So this is the picture of Lai Haraba. Lai Haraba is a festival associated with the Meitei people, celebrated to please the women like traditional deities. Sanamahism, translated Lai Haraba means Mary, making of the Goshin Meitei lawn. In this festival, the people worship Sanamahi, Akhanba, Nongpok, Minchao, and around 364 human lives or the deities of the forest. Thangta or Hueng Lang
Langlong. This is the picture of Thangka or Nguyen Langlong. Nguyen Langlong is an Indian martial art from Manipur. In the Meitei language, Nguyen means war, while Langlong or Langlong can mean knowledge or art. Nguyen Langlong consists of two main components, Thangka and Sarit Sarat. The primary weapon of the Nguyen Langlong are the Thangka and Ta. Now some dishes of the Manipur Uti. So this is the picture of Uti. Thongba is a classic Manipuri vegetarian dish, and there is a variety of how the local cooks, and it is enjoyed as a main dish or even a side dish with your favorite meat curry. Shinju. Shinju, or pronounced as Shinju, is a dish from Manipur often served as a spicy dish. It is also popular as an afternoon or evening snack. So, thank you everyone. धन्यवाद मणिपुर के संस्कृति, कला, उत्सव और व्यंजनों से हमें परिचित कराने के लिए। और अब अवसर है नृत्य को देखने का, सुनने का। तो अब इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय विद्यालय इंफाल क्रमांक 2 के विद्यार्थी मैसनाम आदेशु लुवांग को कि वो नृत्य प्रस्तुत करें। इस सुंदर नृत्य के लिए मैं आशा करता हूं कि इंदौर क्रमांक 2 के विद्यार्थियों ने भी आनंद लिया होगा इस नृत्य का। और अब अवसर है केंद्रीय विद्यालय इंदौर के विद्यार्थियों के नृत्य को देखने का। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं इंदौर क्रमांक 2 के विद्यार्थियों को कि वो अपनी नृत्य की प्रस्तुति दें। Hey,
बहुत सुंदर नृत्य। निश्चित रूप से बच्चों को बहुत बहुत बधाई इस सुंदर से नृत्य के लिए। और अब अवसर है प्राचार्य महोदय को सुनने का, उनके आशीर्वचनों को सुनने का। तो आइए सादर आमंत्रित करते हैं केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2 के प्राचार्य महोदय श्री क्वियान सर को कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित करें। श्री क्वियान सर, केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक 2। Yes, good morning everyone. Respected principal, KV indoor number 2, okay, number 2, and teacher in charges of EBSB. A very good morning to all of you. And I think there is another school attending this program, another school from Madhya Pradesh attending this program. I welcome you all. I have been listening to your music. I have been watching your dance and other performances. You all have presented very well. Under EBSB, we have been given the opportunity to at least exchange some ideas, some knowledge, some information. You know, this is a very good thing, and we must be thankful to Kendriya Vidyalaya Sangathan for making this possible. In fact, if some offline program is possible, it should have been much better, because we will be meeting everyone face to face, and we can have such assembly, such program together in one big hall. It would be great. But as you know, over the past 2 years there were lockdown, and still in some places some cases of lockdown is not there, I guess, but then the so to say the virus is still found in some cases. So I think KVS has prepared an offline program, but still this is a very, very good initiative that we come together on stage, we can see each other, and I congratulate all of you, all the students who have presented your views, your ideas, exchanging with one another. I congratulate all of you. We must be thankful to the teachers who have coordinated the entire exercise.
And you know, Manipur is a small place, is a small state having about 30 lakhs population or more. But in spite of the small population, when you really come to Manipur and see it for yourself, you will find that it's a really beautiful state, beautiful place. And perhaps if you happen to come over here, you may not like to go back to your state again. So at least you should come and taste it for yourself. You see, having attended this program from with Madhya Pradesh reminds me of the days I spent 1 month in Madhya Pradesh in 1982. Those days, I was reading in class 7, and I attended the Bharat Scouts and Guides, National Integration Camp in November, December 1982. I stayed there, 1 whole month, and that was a place called Pasmari. That was a very nice place, and I had the opportunity to visit some places also. The place, the temple and all, I don't remember the name of the temple right now, but I also had the opportunity to visit a place from where the sunset is visible. So I had a very nice time in the Scouts and Guides National Integration Camp way back in 1982, and all the students who are there on the screen, you were still not yet born. Even your mama, papa might not be not yet married. Okay, but all the students of Manipur also, if you happen to have some time, some possibility, you should visit Madhya Pradesh. It's a nice place. I would like to say thank you to the teacher in charges for making this program successful with lots of efforts, with lots of time that you have given. I thank you all. God bless you all. Thank you. धन्यवाद सर, अपने अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय इंदौर क्रमांक 2 के प्राचार्य श्री मनीष जैन जी को कि वो आए और अपने अनुभवों से, अपने विचारों से मनीष जैन प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय Good morning, teachers, those who are coordinating, and my dear students. This is really very wonderful to interact with people of Manipur and School of Manipur. I had chance to serve in northeastern state of Meghalaya from 2000 to 2003. And the beauty I saw of Northeast, though I didn't visit Manipur, but I can imagine the people, the culture, the demography, the linguistic, enrichment of Manipur. I read a book of about 7 sisters in that in those days, and as sir said, the state is small. The size is not important. The achievements are more important. I remember Mirabai. I remember Mary Kom. I remember many great Dingo Singh, sportsmen. This is the, I say, powerhouse of the sports of India. And we must claim for Manipur for this achievement. It has given chance. Manipur has given chance to Indians to have pride in Olympics and at world level. This is not less achievement. I can remember Lispria. Today there was a great talk around about green, that is climate change, and this all. I appreciate the people, those who are organizing, and these students are very much concerned about climate changes. So I must cite here Lispria, who is
small, matlab that is age, very less. She is very young, but her efforts are not small. Whatever she is doing, asking question to the authorities, and that is most important. Until and unless we ask that their future should be bright, the authorities are, very much negligent. So this is though the state is small, but the achievements are not small. I must I must say to the students of MP, Madhya Pradesh, that they must visit India. Not only Manipur, not only northeastern state. People go to say they go for spending holidays abroad. They go to Maldives, they go to Switzerland, they go to various places, but they don't know this India comprises whole world. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, वेशभूषा अनेक किंतु माला फिर एक है. There are variety that I would say the diaspora of Indian culture, Indian languages, this is very beautiful. And despite of all these things, all we are united. That is because of Indianness. So I must congratulate all of you for exchanging thoughts, exchanging cultural differences to India, and we must adopt some good of each other, whatever is there. We were talking about climate changes. You have cited many reasons, but I appeal all of you that what you see apparent reasons, that is burning of fossil fuel, burning, that is cutting of trees. Apart from this, you are also responsible if you are not cutting trees. In increase, Gandhiji said, this earth is enough for everyone's need, but not enough for anyone's greed. If we are using more than our requirement, say if we require 4 pair of clothes, if we have 10 pair of clothes at our home, then we must have utilized resources of earth. If we can use 1 bucket water, if we are using 10 buckets of water, we are contributing in this climate change. So we must think over our own lifestyle, whether we are harming nature by this materialistic, using materialistic thing or not. And this is not Indian culture. I saw the people of Northeast, they are very humble, they are very economic, they are very, I would say, nature caring. I saw, as I said, Meghalaya. You see, the cleanest village of whole world is in Meghalaya. The cleanest city, I must say, with pride, of India is Indore. So I invite students of KV Imphal, principal and staff of KV Imphal number 2 to visit Indore, and we will be happy to give hospitality to all of you. So I urge all of you to be Indian and exchange all these things and keep the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat high. Thank you once again. Thank you for inviting me. Thank you very much, everyone. धन्यवाद सर, अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की प्रशंसा करने के लिए और हमें आमंत्रित करने के लिए. I request all of you to open your camera so that we can have screenshots. All of you, please, Principal Sir, Alang Sir, and all of you, please open your cameras so we can have screenshots. This is RK Sir and Geo. All please open camera. Please take screenshot both sides. Yes, बहुत बढ़िया बच्चे. धन्यवाद सभी को. और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए नीलम कुमार बीना मैम को. थैंक यू सर. धन्यवाद चरी. आदरणीय श्री मनीष जैन सर, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय इंदौर नंबर क्रमांक 2, एंड आदरणीय श्री के अरुण कुमार सर, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय इंफाल नंबर 2, एंड यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान्य
शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात एंड पूर्व जगी। मैं नीलम मीना, पीजीटी ज्योग्राफी, आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री मनीष सर का, जिन्होंने मुझे ये धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान किया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रधानाचार्य श्री के अलुम्बा सर का, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री मनीष जैन सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अपने आशीष प्रश्नों से सभी छात्र छात्राओं और स्टाफ को अनुप्रेरित किया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समस्त अध्यापक, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्रीमती शोभा प्रजापति मैम को, जिन्होंने स्वागत भाषण के माध्यम से हम सभी को केंद्रीय विद्यालय इम्फाल क्रमांक नंबर 2 का स्वागत किया और इस प्रोग्राम को शुरुआत की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट करके ये कार्यक्रम सबसे पहले 31 अक्टूबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया और इसकी एक ही मुहिम थी, जिसके अंतर्गत था अनेकता में एकता, कि हमारे पूरे देश में अलग अलग भाषा, जैसे कि अभी मनीष जैन सर ने बताया, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं, रंग रूप